C and D, then solve for A and B. A और B की वैल्यू C और D के टर्म्स में आ जाती है. Then substitute them here. So this is how we have obtained these questions. Now देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. Question number 5. Hence this is right hand side. ये प्रूव हो जाता है. Hence okay, ये प्रूव करने के बाद में let me take अगला क्वेश्चन क्या है. Now next question is 6th one. What is that? ये भी नेक्स्ट फॉर्मूला है. इस तरह से भी इन फॉर्मूले को यूज करते हैं. इस फॉर्म में भी क्वेश्चन नंबर. नाउ साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट. ओके, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d. This is the 6th question number. Okay, now solution. Again, either sin a plus b plus sin a minus b. Sorry, minus sin. From second question. Question number 2. Sin a plus b minus sin a minus b की वैल्यू थी cos a into sin b from equation number 2 or equation 2 from question number 2. Let me write here. This is question number 2 from question 2. From question number 2 we have this cos a sin b is equal to this. Again putting a plus b equal to c, a minus b equal to d. Same thing. This implies that a equal to c plus d by 2. B equal to, similarly we have to, we have solved this. जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, ऐड करने पर ये ट्वाइस a आता है, c plus d हो जाता है. u आप नीचे ले जाते हैं तो a की वैल्यू c plus d अपॉन 2 आ जाती है. b की वैल्यू c माइनस d अपॉन 2 जो हमने 5th क्वेश्चन में किया था, सेम यहाँ का a और b की वैल्यू c और d के टर्म में निकाल देते हैं. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन we will get hence sin c minus sin d equal to 2 cos c plus d upon 2. a की वैल्यू this is a into sin c minus d upon 2. Okay, and this is right hand side. And put ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का. ओके, इस तरह से आप सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. अब देखते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 की क्या प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 एंड 8 दोनों ही अगर अगले फॉर्मूले हैं. cos के लिए cos c minus cos d and cos c plus cos d. cos c plus cos d 7 की वैल्यू, ये भी अगला फॉर्मूला. cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. ये फॉर्मूला 7 था. cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. ये 7 फॉर्मूला है. ओके, इस तरह सॉल्व करना है तो देखिए सेम प्रोसेस. Since cos a plus b की वैल्यू होती थी, और we can just write, if we write third question, since this is 2 cos a into cos b equal to cos a plus b plus cos a minus b. This is from question number 3. On question number 3, this we have again putting or substituting, putting a plus b is equal to c, a minus b is equal to d. Let me take this as first, this is second. Adding first and second, same process.
adding first and second, to we get twice a, these two will be cancelled out, twice a equal to c plus d, or a equal to c plus d upon 2, and v is equal to c minus d upon 2, जो कि आपने पहले भी प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 6 तक से आप 5th 6th में सेम प्रोसेस है। ए प्लस बी एज्यूम करने के, ए प्लस बी को आप सी मान लेते हैं, ए माइनस बी को डी मानते हैं, दोनों को ऐड करने पर ए की वैल्यू आती है, सब्ट्रैक्ट करने पर सेकंड को फर्स्ट से बी की वैल्यू आ जाती है, और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे उस तरह से आप इनको सॉल्व करते इक्वेशन को और बी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू आती है ए सी प्लस डी बाई 2, बी इज सी माइनस डी बाई 2, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर, therefore twice cos c plus d upon 2 a की वैल्यू into cos c minus d upon 2 equal to cos c plus cos d, but this is just reverse of this, or cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. Okay, hence the right hand side. This is the right hand side. Hence good. Hence good. Okay, so question number. This is 7.1. Now if we take question number 8 और 8वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 8 में भी सेम प्रोसेस, जैसे एज्यूम करने की a plus b equal to c and a minus d, a minus b equal to d. एज्यूम करें क्वेश्चन 8 डिफरेंस वाला फॉर्मूला है, ओके, फ्रॉम डिफरेंस टू प्रोडक्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ हियर वी हैव cos d by minus cos c. In this case it is d first then c. याद रखना cos d minus cos c equal to 2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon. There are different methods of this. अगर आप इसको d minus c रख देते हैं, sin d minus c, और here it will be then cos c minus cos d, no problem. और आपने d minus c लिखा है, पॉजिटिव साइन रहेगा, और आप लिख सकते हैं cos d minus cos c. If it is c minus d, sorry, c minus d, this is okay. But if it is cos c minus cos, then it will be negative sign. Let me write this in 3 ways. What are those ways? If I write all cos c minus cos d into minus sign to sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, और सेकंड मसला ये भी है, 3 फॉर्मूला आते हैं. If I write it as positive to sin c plus d by 2 into sin, I write here d minus c by 2. Here it is d minus c by 2. Because sin is odd function. If I write c minus d, then it will be negative. That negative sign will come here. But in multiplication, because this is this into this, it is multiplication sign. Make this negative sign here. In this way, there are 3 processes of writing this formula. Question 8 can be written in these 3 ways. Either cos d minus cos c equal to sin c plus d sin c minus d by 2, no problem. But here negative sign is here, cos d minus cos c. Or if I write cos c minus cos d, from this take negative sign, multiply both sides negative, so this negative, then this will become cos c minus cos t. Okay, second point. Third point is cos c minus cos t, no problem. But this one negative, so this negative sign I have put here. This is d minus c. Instead of c minus t, I have written down here d minus c. ये 3 तरीके हैं इस फॉर्मूले को याद रखने. I mean कई बुक्स में ये मिलता है, कई में ये इसमें different writers have taken in different ways. But answer is same because values from left hand side written, we will see that all these formulae are same. तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, 3 तरीके हैं इस फॉर्मूले को लिखने के, याद रखने के. चलिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं.
इस तरह से आता है. अगेन लेट मी सॉल्व इट. Solution. Now from fourth question number 4. From question number 4, we have what do we have? 2 sin A into sin B equal to cos of A minus B minus cos A plus B. Putting or substituting. Again same thing, we have to write substituting A plus B is equal to C and A minus B is equal to D. On addition subtraction same thing, we will get on addition and subtraction, let me write on addition and subtraction we get A equal to C plus D upon 2 and B equal to C minus D upon 2 is the value. Okay, and A plus B equal to C, A minus B equal to D. Substituting these values here, or we will get twice sin A is C plus D by 6 into sin B. B is here C minus D by 2. This is plus equal to cos A minus B, that means cos B minus cos C. Okay, or cos D minus cos C equal to 2 sin C plus D upon 2 into sin C minus D upon 2. Okay, cos D minus cos C equal to this. Either say these two other form can be drawn from here. They can be derived from here. And derivation of that is just clear. We take minus sign. This because sin minus theta is minus sin theta. If I take minus sign from the bracket of this, from angle of this, it will be D minus C. Okay, but this minus sign because sin minus theta is negative sign here, so that negative sign will come here. Or this can be replaced D minus C equal to. Okay, so if I write it as cos C minus cos D, this negative sign will come to this side. It will give us either minus 2 sin C plus D upon 2 into sin. Same thing, we have just put the negative sign multiplying by negative sign both sides. So this is the process. Or the third formula is this. Sorry, this we have put, and this is the third one. Cos C minus cos T. I keep it here. Then it becomes D minus C to make it positive. This is the third process. Okay. The same thing. This is question number 8. All the 8 formulae have been derived. Okay. The derivation of that is now clear. अब देखते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन 9 से लेकर 18 तक किस तरह सॉल्व करते हैं. हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं. ओके, so question number 9 to 18. Those questions are numerical questions I have taken, or questions based on these formulae, just to illustrate them. तो क्लैरिफाई करने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिए हैं. भी आप देख लेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं. Let me clean this. Okay, question number 9 और 9th question में क्या कहते हैं देखते हैं. What is question number 9? Let me solve it. And what is the formula which is used? I'll just verify. Then you will get everything.
Okay. Now let me take the questions based on this. इसलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में देखा है नंद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, क्वेश्चन 9 कहता है 2 cos of, okay, this is 2 cos 5 theta into cos 3 theta की वैल्यू है क्या आती है. Okay, solution is not given, we have to find out this. To find the following. Now from question number 9 to आते हैं 14th question. Up to 14th question, we have to find the following trigonometric ratios or these multiplication. Let me solve that. Okay, so here we have cos C cos B formula. 2 cos A cos B equal to cos A plus B plus cos A minus B. On third formula, 2 cos A cos B solution. Let me find the solution. Or proof we can, or sorry, solution we have to find out. Here we have from question number 3. What do we have? 2 cos A cos B is a product formula in sum is equal to cos A plus B plus cos A minus. If it is cos A cos B, then plus sign cos A plus B plus cos A plus B. Okay, now putting or substituting what A is equal to, because bigger value is 5 theta and B is equal to 3 theta. So we get from this equation, this is let me take first equation. In first, substituting this, putting or substituting this in first, we get this. What do we get? This is 2 cos 5 theta into cos 3 theta is equal to, this is cos A plus B, 5 theta plus 3 theta. It will be cos 5 theta plus 3 theta A plus B plus cos A minus 5 theta minus 3 theta, 5 theta minus 3 theta, 5 theta plus 3 theta A plus B, A minus B is cos. What will we get? 5 theta plus 3 theta is 8 theta, cos 8 theta plus cos 2 theta. This is the answer here. क्वेश्चन 9th का ये आंसर है जो कि इस तरह सॉल्व करते हैं. इसे फॉर्मूला यूज किया, थर्ड वाला फॉर्मूला यूज किया आपने, और दैट प्रोडक्ट फ्रॉम सम फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला भी है यूज किया. cos A cos B cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B इधर cos 8 थीटा plus cos 2 थीटा, ये इसका आंसर होता है और है. ठीक है, इसका आंसर. Let us take question number 10. 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? Take 10. Okay guys, so question number now 10. Question 10 is again to find the question 9 and this is 10. 2 sin 4 theta. This is 2 sin 4 theta into sin 7 theta is what? Solution. So this is from question number 4. Question number 4 का formula use किया sin A sin B, sin A sin B. Now here A is 7 theta bigger value and C is 4 theta. Sorry, B is 4 theta we are taking. Okay, so this value 2 sin 7 theta into sin 4 theta. Okay, this is the, or this we have to find out.
Now let me just find out from question number 4 above. We have sin A sin B की वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म सम सॉरी ये केस में डिफरेंस आएगा cos A plus B first is A minus B, sorry this is A minus B, first cos A minus B minus cos A plus B. This I have been in progress. This minus sign, if I take this positive, this minus, then it negative sign. Okay, in between, or we can add B minus A here, make it here cos A plus B. Okay, so that can also be done. Now, this is the formula we have to use here. In place of A, we have 7 theta. Putting A equal to 7 theta and B equal to 4 theta. So what do we get? Then हमें ये मिलता है क्या? 2 sin A means 7 theta into sin 4 theta की वैल्यू आती है cos 7 theta minus 4 theta minus cos 7 theta plus 4 theta. तो अब देखते हैं cos, this is 7 minus 4 3 theta minus cos 7 plus 4 11 theta. Okay, so this is the value here. This is cos A minus B first, then minus cos A plus B is the value. Okay, this is cos A, 2 sin is coming. This is the answer here. So this is the answer. Here we have to find the answer. How to solve these questions, what the values of them, इस तरह से निकालनी है, ये आपको प्रोसेस में है. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. व्हाट 11 क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 11 is sin 5 theta cos theta. Okay. Now question number 11 is sin 5 theta and cos theta. Now हमेशा याद रखिए, पहला जो बड़ा एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है कौन सा टर्म पहले आया. मीन्स इन दिस केस sin 5 theta एंगल इज बिगर देन थीटा, cos theta is coming later. This is value A, this is B. This is sin A cos B formula, first one. Okay, so this is solution number 1. Here we know from question number 1 what that 2 sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B. Okay, or sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B divided by 2. ये 2 नीचे आ जाता है. अब देखते हैं A और B की वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. क्या है वैल्यूज? हियर A की वैल्यू है 5 थीटा एंड B की वैल्यू है 3 थीटा only, right? So putting this value in first equation, this because keeping them or putting them, substituting the values of A and B in first. What do we get? This is sin 5 theta into cos this B is theta here is equal to sin of A plus B 5 theta plus theta plus sin A minus B is 5 theta minus theta divided by 2. दो से आपने इसको डिवाइड किया. sin 6 थीटा की वैल्यू आती है प्लस sin 4 थीटा 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा 1 2. ये आंसर है.
क्वेश्चन नंबर 11. ओके, 11वां क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. फाइव साइन 5 थीटा cos थीटा. This 2 will come here in the denominator. तो यहाँ जो है उस 2 को आप नीचे ले आते हैं. फॉर्मूला हमारा वही है, साइन ए cos b इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी प्लस साइन बी. तो क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्ट एप्लीकेशन है. तो आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 11 डाल. क्वेश्चन क्या है देखते हैं. क्वेश्चन क्या है. ओके, now question number 12. What does it say? Let me take it. Question number 12 here. Okay, 12th is cos theta sin 8 theta. Okay, this is cos theta. Yeah, cos theta into sin of 8 theta. Again, 8 theta is bigger than theta. This is sin A first. Or solution cos sin 8 theta into cos theta. This is again first question, application of first question. 12th cos theta sin 8 theta. If this is just application of the question number 1, sin A cos B. To sin A cos B, again we know solution. We know from question number 1. What do we have? That is 2 sin A cos B. 2 sin A cos B equal to sin A plus B plus sin A minus B, or 2 divided by this, or sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A माइनस बी की वैल्यू डिवाइड करिए 2 से, तो इधर आ जाता है नीचे. ठीक है, तो ये पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी, ए इज हियर 8 थीटा एंड बी इज थीटा. तो सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल टू 5 थीटा और 8 थीटा, 8 थीटा and b is equal to theta. Yeah, b equal to theta. We get in this equation. This is first equation that we take in first. Substituting a equal to this in first. We get this is sin 8 theta into cos theta. Sin 8 theta into cos theta is equal to this sin 8 theta plus theta plus sin 8 theta minus theta whole divided by 2. वैल्यू आ जाती है sin 9 थीटा प्लस sin 7 थीटा बिकॉज 8 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2. यही आंसर है. इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि sin 9 थीटा sin 7 theta, theta is unknown value, so we cannot solve it further. This is the answer. ठीक है, यही आंसर है. इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये था आपका 12th क्वेश्चन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है. ओके, लेट मी टेक 13. क्वेश्चन नंबर 13. ओके, 13th question है 2 cos, this is 2 cos alpha plus beta into cos alpha minus beta की वैल्यू क्या आती है. What is the value of this? Okay, again this is question number 3 का यूज सॉल्यूशन from question number 3. We have what do we have? Cos A into cos B equal to cos of A plus B plus cos of A minus B.
this is a minus b. क्वेश्चन नंबर 3, cos a plus b plus cos a minus b की वैल्यू आप देख रहे हैं, cos c cos यार एक ही जगह पर अल्फा और बीटा a is equal to alpha plus beta and b is equal to alpha minus beta. ओके, तो अल्फा a प्लस b क्या आएगा, a माइनस b क्या आएगा, ये सॉल्व कर देते हैं. फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इस इंप्लाई दैट a प्लस b की वैल्यू पर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस b एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, we write here adding first and second, a plus b left hand side, इसमें b cancel out, beta cancel out होता है, this is twice alpha, a plus b because आपको a plus b रिप्लेस करना है यहाँ पर, a plus b की वैल्यू twice alpha रखते हैं, a minus b क्या कहते हैं, and a minus b means इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, alpha plus beta minus alpha plus beta, आंसर पोटेंशियल ऑफ दिस ट्वाइस बीटा. तो आप देख रहे हैं कि a प्लस b की वैल्यू ट्वाइस अल्फा आती है, a माइनस b की वैल्यू ट्वाइस बीटा आ जाती है. इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देयरफॉर ट्वाइस cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू cos ट्वाइस अल्फा प्लस cos ट्वाइस बीटा, where alpha a minus b is twice beta, a minus b is twice beta. ये वैल्यू आंसर आता है. इस तरह से इसकी वैल्यू आती है cos 2 alpha plus cos 2 beta. ये द आंसर है. ओके, सो क्वेश्चन 13 की ये वैल्यू है cos twice alpha plus cos twice beta 2 beta, cos 2 alpha and 2 beta. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व होता है, 13 क्वेश्चन. ओके, अब डिस्कस करते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है, 14. क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. ओके, now 14th question is, let me take question 14 is sin of alpha plus beta into cos of sin into cos of alpha minus beta into की वैल्यू आपको फाइंड करनी है.